Okay, children, see question number 7 now, which says question number 6 I have skipped right now, whose solution I'll provide you after completing this exercise. ठीक है, पहले ये बाकी पूरे हो जाए, then I'll tell you. Sixth one says that if cot theta equals to 7/8, you have to evaluate 1 plus sin theta, 1 minus sin theta, 1 plus cos theta, 1 minus cos theta. Do NCERT examples also today, huh? So this is the expression that we have to find out. Again we are given ratio. Which ratio? Cot theta equals to 7/8. Given cot theta equals to 7/8. Fine. And you know cot theta is what? Base upon perpendicular. Tan theta आपका perpendicular by base होता है तो cot हो जाएगा base upon perpendicular. ठीक है. Base upon perpendicular. Let base equals to 7k and perpendicular equals to 8k. For a right triangle, ठीक है, suppose this is the given right triangle having this angle as theta. We are saying base is 7k. For theta, this adjacent side would be the base 7k and perpendicular is 8k. तो हमें पहले तो हाइपोटेन्यूज पता करना पड़ेगा. ठीक है, सो हाइपोटेन्यूज विल बी अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. दिस इज द रिजल्ट. विच रिजल्ट? दिस इज पाइथागोरस थ्योरम ओनली. ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है. एक्चुअली आपका पास होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. मैंने सीधे क्या ले लिया? स्क्वायर रूट ले लिया. सो परपेंडिकुलर वी हैव इज 8k, सो इट विल बी 64k स्क्वायर प्लस दिस विल बी 49k स्क्वायर. राइट. 9 4 13 6 4 1 10 11 k square. 113 is not a perfect square, so hypotenuse will be under root 113 times k. ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? देखिए, साइन और कॉस की जरूरत है आपको. सो साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse. दिस इज हाउ मच? दिस इज अंडर रूट 113 times k now, है ना. So sin theta is perpendicular upon hypotenuse, that is 8k upon under root 113k. k will get cancelled by this k, तो ये आ जाएगा 8 upon under root 113. Fine. Same way cos theta will be base upon hypotenuse, that is 7 times k upon under root 113k. Again this k will get cancelled and ये आ जाएगा 7 upon root 113. ठीक है, 7 upon under root 113. ये क्या है? sin theta's value and this is the value of cos theta. Now take the expression that we have to solve. Now 1 plus sin theta into 1 minus sin theta. वैसे तो ये आइडेंटिटी बन रही है, बट अभी हमने क्योंकि आपको आइडेंटिटीज पढ़ाई नहीं है, so I am directly putting the values. 1 minus cos theta. अलजेब्रा की आइडेंटिटी भी एप्लीकेबल है यहाँ, बट फर्स्ट वी आर पुटिंग द वैल्यू, देन वील अप्लाई द आइडेंटिटी. तो आपके समझने के लिए इजी होगा. 1 प्लस 8 बाय रूट 113 इंटू 1 माइनस 8 बाय रूट 113. हियर इट इज 1 प्लस 7 बाय रूट 113. a माइनस b 1 minus root 7 by 113. No, this is not root. This is without square root 113. Numerator has no square root. It is simply 7 by root 113. Now see, in numerator you have a plus b, a minus b. In denominator also a plus b, a minus b. तो identity बन रही है a plus b, a minus b. Here also a plus b, a minus b. And you know this identity, a plus b, a minus b is written as a square minus b square. So this identity will apply on the right hand side in numerator as well as in the denominator. तो क्या हमें मिलेगा? देखिए, is equal to this only we are continuing. 1 square minus 8 upon under root 113 square, a square minus b square, divided by 1 square minus 7 upon root 113 square, that's equal to 1 minus 64 by 113 and whole divided by 1 minus 49 by 113. ठीक है, so take LCM. 113 minus 64 divided by 113 minus 49. Denominators after taking
LCM आर कैंसल्ड आउट विच आई हैव नॉट शोन. ठीक है, इतना तो आप समझ सकते हो, 10th में पढ़ते हैं आप. So I have not shown that cancellation of denominators. Now 13 minus 4 will be 9. 10 minus 6 will be 4. ठीक है, and here it will be 64. So this is the answer. This is the answer to the first part. 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. Second part it is asking for cot square theta. ये तो आपको जो given expression है उसी का स्क्वायर करके मिल जाएगा. 7/8 square that is 49/64. Both are coming equal. ठीक है, cot square theta और आपका जो पहला वाला expression है, the both have same result. Fine. Now see question number 9 you have that you have to try yourself. Question number 9 आपने खुद से try करना है. If any problem arises you will let me know. I am taking question number 10 after this. Question number 9 छोड़ दूँ ना, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं चलिए इसके लिए, और फिर आप खुद करोगे बच्चा हुआ पोर्शन. See what question 9 says. Question 9 says, in triangle ABC right angled at B, there is a triangle ABC which is right angled at B. Suppose this is ABC right angled at B. ठीक है, what it says that tan A equals to 1 by root 3. Tan A is equal to 1 by root 3. We have to find out value of sin A cos C plus cos A sin C. Second part is also there. I am taking only the first part. Second part आप खुद करोगे. ठीक है, क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट में? sin A cos C plus cos A sin C. ठीक है, see now we are given tan A is equal to 1 by root 3, that is equal to perpendicular upon base. So let perpendicular equals to under k times 1 into k, that is k itself, and b is equal to root 3 into k, that is root 3 times k. ठीक है, now ये हो गया हमारा tan A है ना, परपेंडिकुलर निकाल लिया k एंड बेस भी निकाल लिया root 3 k. now sin A निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज हमें चाहिए. so हाइपोटेन्यूज will be under root of perpendicular square plus base square, that is under root of k square plus root 3k square. ठीक है, perpendicular square plus base square, that is root 3k square, that's equal to k square plus 3 times k square. root 3 का जो square आ जाएगा वो आ जाएगा 3. so it will be under root of 4 times k square, that is 2k. that is how much? 2k. hypotenuse we have calculated है ना. so now what we have to find out? we have to find out sin A. sin A होना चाहिए हमारे पास, cos A होना चाहिए, sin C होना चाहिए and cos C होना चाहिए. sin A and cos A पे बात करते हैं पहले, then we'll talk about sin C and cos C. sin A के लिए जब आप बात कर रहे हो तो for angle A perpendicular is, for angle A tan A is 1 by root 3 perpendicular upon base. ठीक है, एंगल A के लिए आपने परपेंडिकुलर किसको लिया है? K को लिया है, एंड बेस किसको लिया है? अंडर रूट 3 K को लिया है. तो हाइपोटेन्यूज आपका आया 2K. ठीक है, हाइपोटेन्यूज यू हैव ऑब्टेन्ड एज 2K. सो साइन A मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse, that is k by 2k, that is half. Then cos A would be base upon hypotenuse, that is root 3 k by 2k. k cancel, that is root 3 by 2. ठीक है, फिर आप किसकी बात कीजिए? साइन C and cos C. फॉर एंगल C perpendicular would be this and base would be this. हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा. ठीक है, साइन C आपका होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज रूट 3k by 2k, दैट इज रूट 3 by 2. ठीक है, एंड cos C हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज k by 2k,
that is 1/2. ठीक है. Now what expression we have to evaluate? We have to evaluate sin A cos C plus cos A sin C. ठीक है. Sin A value is half, cos C value is half, plus cos A value is √3/2 into sin C is also √3/2. It was not visible earlier, so I am telling again. Sin A cos C. Sin A कुछ नहीं किया हमने, values रख दी उठाकर. Sin A is half, cos C is half. ठीक है, so half into half. Plus in between, cos A is √3/2 and sin C is √3/2. So now we can simplify. This will be 1/4 plus under √3 into under √3 will give you 3/4. That is 1 plus 3, 4/4. That is 1. ठीक है, 4/4 that is 1. So this is the required answer, we can say. Question number 9. This one only has 2 parts. Second part you have to do yourself. कुछ नहीं, आपने values तो निकाल लिए. You just have to substitute now in the other expression. That expression is cos A cos C minus sin A sin C. दोनों values आपके पास है, आप complete कर लीजिएगा. ठीक है.